वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स देखने वाले हैं, मुझे नहीं लगता तुम लोगों को पता है। स्टिक अराउंड टिल द एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला वीडियो विफीस की तरफ से, लेट्स गो। It can imitate the noise of nearby hostile mobs, acting as a way to detect potential Actual में enemies outside your ये walls. काम करता है। This is especially useful because creepers are usually silent. So the next time you're बहुत building a ज्यादा silent base, रहते हैं having a लोग। few of these guys perched around might just save अगर तुम your लोग केव में construction. लेके You ever जाओगे ना, noticed तो लोग क्रीपर के हिसिंग का साउंड करते हैं और फिर तुम लोग को उससे पता चल जाएगा क्रीपर आने वाला तुम लोग के पास। कभी कभी अनोइंग हो जाता है बट कभी कभी यूजफुल रहता है। symbols ओके, on ये क्या है? crystals? Well, at first they may just Symbols seem like random मैंने इतना nonsense. notice कभी नहीं If किया you अच्छे look से। closer, you might notice something. By rotating and putting the symbols next to Whoa. each other, you can actually create what looks like the word Mojang. Whether this is intentional or not is yet to be confirmed, but they if are it is, smart, it's a really right? cool and if you crouch, hostile mobs will only be able to see you from 80% of their usual range. For example, मतलब? creepers that can usually detect you from 16 blocks away will now only be able to notice you from 12 blocks away if you crouch. I never knew making this. very How useful is for this possible? thieving and whenever you don't want to get spotted. Another cool feature that you might not have known about parrots is their weird cult behavior when it comes to other mobs. Untamed मतलब? parrots are programmed to follow and stalk random mobs in the vicinity. This नहीं। produces some really funny and really cute looking effects. The best part is I found अपने this को out try करना पड़ेगा। completely on accident while recording footage for this script for the previous clip. The more you know. If you don't kill a silverfish in one hit, more will spawn from the infested blocks around you. But knocking these critters out with one strike ओके, 2 सेकंड, ये मेरे को नहीं पता था। अगर हम लोग ने एक इन्फेस्टेड वाले को एक हिट में नहीं मारा सिल्वरफिश को, तो फिर वो बाकी के सब स्पॉन कर देता है। व्हाट? चलो ट्राई करते हैं। अभी मैं आगे गेम में पैरेट्स लेते हैं। तो जैसे उसने बताया क्या ये लोग पैरेट्स लोग वियर्ड बिहेव करते हैं मॉब से रिलेटेड। चलो बहुत सारे स्पॉन करते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है। ओ एक्चुअल में वियर्ड बिहेवियर तो है, तो लोग ये पिक के पीछे पड़े आई थिंक। वो तुम लोग सुना क्रीपर का आवाज? तो मुझे नहीं लगा था ये एक्चुअल में ऐसे काम करेगा। एज वेल एज ये देखो कैसे स्टेयर कर रही है वो, जैसे उसने बताया था। लिटरली उसको स्टेयर कर रही है और अपने को भी कर रही है। दिस इज क्रीपी। एक और उसने सीक्रेट बताया था सिल्वरफिश से रिलेटेड। सो लेट्स गो टू द स्ट्रॉन्ग होल्ड। तुमने देख सकते हो ये अच्छा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड से कनेक्टेड डंजन। चलो पोर्टल रूम दिख गया, चलो ट्राई करते हैं। मैं इसको एक हिट में नहीं मारता हूँ, मैं इसको एक बार मारा। ओ तुम लोगों ने देखा ये एक्चुअल में काम करता है। व्हाट? वो देखो मैंने उन लोगों को तोड़ा भी नहीं, वो ब्लॉक और खुद से हो रहा है सब कुछ। कहाँ दूर दूर से आ रहे हैं इन लोग। ये एक्चुअल में सीक्रेट काम कर रहा है। आई नेवर इवन न्यू दिस। क्या तुम लोगों को पता था? ये कमेंट करके बताना एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीक्रेट। चलो ये देखते हैं। large creeper blows up a mob, that Of course, mob skull will drop drop होता है। its skull. What you might not know is that if you wear that skull, mobs of that type will only be able to ओ see ये you भी मेरे को from पता था after एक्चुअली। you- तो तुम लोग को इतना अपने को पता चला कि अगर हम लोग क्राउच करेंगे तो हम लोग 2-3 ब्लॉक तक ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो अगर हम लोग उसका हेड पहन ले तो हम लोग आधे डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं। अभी जो तुम लोग इधर ये येलो ब्लॉक दिख रहे हैं, तुम लोग इधर तक आ सकते हो अनडिटेक्टेड। 8 ब्लॉक्स अवे, मतलब 8 ब्लॉक्स के अंदर अंदर ही नोटिस करेंगे उन लोग। चलो ये देखते हैं। actually eat honey blocks. What? When a honey block is मैंने सही सुना, bees can actually eat honey block. What? placed near a beehive, bees will sometimes fly towards the block and attach to it, standing completely still as if they were eating the honey. A cute little interaction that you might not have known about if you hadn't looked closely. You can fly मैंने नहीं देखा कभी भी मेरे लाइफ में। हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा पहले और देखते हैं। faster or slower in spectator mode by scrolling. By scrolling up ये ट्रिक मेरे को लिटरली बहुत लेट पता चला। मैं तुम लोग को ही दिखाता हूँ। हम लोग ने बी का स्पॉनिंग ले लिया, एज वेल एज हनी ब्लॉक ले लेते हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे हनी ब्लॉक प्लेस कर देते हैं, एज वेल एज बी स्पॉन कर देते हैं इधर भर भर के। होपफुली हम लोग को वो सीन दिखे, तब तक हम लोग दूसरा वाला टेस्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये वाला चीज ट्रिक यूज करते हुए नहीं देखा है। तुम लोग को कुछ नहीं करना, तुम लोग इसमें स्पेक्टेटर मोड पे जाना है। अभी यूजुअली पता है क्या करते हैं लोग नॉर्मली ऐसे चलते हैं। अगर तुम लोग अपने माउस को स्क्रोल करोगे, जो अपना स्क्रोल व्हील रहता है उसको घुमाओगे तुम लोग, तो तुम लोग का देखो स्पीड बढ़ जाता है। लिटरली मेरे को पता नहीं था, और जब से मेरे को पता चला मैं हर बार यूज करता हूँ जब भी मैं स्पेक्टेटर मोड में हूँ। कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। स्पीड देखो मेरी। आई डोंट थिंक सो एक भी इंटरेस्टेड है। आई थिंक सो इसको थोड़ा टाइम चाहिए। ऑफ कोर्स इतना जल्दी तो होगा नहीं है कि उन लोग अपना सर घुसा दे अंदर, या फिर उन लोग को ज्यादा ब्लॉक्स प्लेस करके चाहिए। प्लीज जस्ट डू इट ऑलरेडी। ओके चल तू कर सकता है प्लीज। चलो इसमें हम लोग को टाइम लग रहा है, बट तब तक हम लोग कुछ और सीक्रेट्स देखते हैं। चलो ये देखते हैं। Igloos are one of the most underappreciated structures ever, and here are a few reasons why. First of all, if you मतलब? either cure the zombie villager or just free the regular villager, the igloo is actually made to be detected as a village, which means that once you do this very simple task, if you end up Okay. getting the bad omen effect, you can just trigger a raid on the igloo. This way your main village Oh. doesn't get damaged and the pillagers Oh. will never find their way down the hatch. It's a really neat way to मेरे को नहीं dispose of पता a था। raid, and the pillagers, well, they won't know what hit them. But that's not all the magical Okay, अच्छा properties. trick है। Something about Okay, the ये क्या है igloo is the igloos के बारे में? placement of the window. You see, for one reason or another, the devs intentionally placed the ice window of this igloo in this location. Why? Oh. Well, it's the one place that will be melted when you use the furnace. The light
from the furnace is perfectly placed to melt the window and give you a fresh water source. I have no idea why this is. but my क्यों main किया वो theory किसी is को that नहीं it पता, helps बट keep अगर तुम लोग away the furnace use carpet. करोगे तो Let me हर know बार your वो होगा thoughts. ही. Each mob in the game has a sound. Pigs oink, cows Of moo, course. sheeps baa, and elder guardians, well, elder guardians moan. If you turn on subtitles, the official sound for whatever noise an elder guardian makes is called a moan. Kind of funny. Elder and weird guardian choice, moans, but okay. If you ever want to build up somewhere but you also want to get back down easily, placing a torch on the block you're using. You can keep the ओह torch तुम in लोग your offhand. मैंने ये and the ट्रिक block in एक्चुअली your कवर main किया मेरे hand, शॉर्ट then वीडियो में आई displace the थिंक. torch, तुम लोग break the टॉर्च की torch, मदद से ब्रिजिंग कर repeat, सकते हो. and boom, सोचो a staircase एक टॉर्च just की as मदद से effective, पूरा but with ब्रिजिंग. half speed. और तुम You लोगों can को कुछ make करने की one-way जरूरत नहीं है glass इसके अलावा. see a चलो ये secret देखते हैं. Because it's so hard to spot. Like, it's in plain sight, but I bet you never would have noticed if I hadn't pointed it out. Take a look at the honey bottle and the water bottle. Notice anything different? Well, while the नहीं. water bottle and all subsequent potions have an empty space made up of an upside down Oh, T, okay. the honey bottle नहीं. is just slightly honey more block थोड़ा सा full, ज़्यादा 4 भरा हुआ है. pixels more full मत to करो be ऐसा. exact. This actually wasn't a mistake and was fully intentional, but I don't think we'll ever really know why. The official Okay. line fact, a reference to the long forgotten texture in older versions of the game. This अच्छा, texture हाँ, was मैंने ये replaced by texture cod देखा, and guaranteed. salmon, but lives on in the fisherman's clothes. Some things in Minecraft seem to have strange names, but upon further inspection make complete sense. For instance, Nylium is just a combination of the words nether and mycelium. Additionally, according to Mojang, the word shulker comes from the two words shell and lurker, hence how the shulker lurks in its shell before coming out. If you're having trouble taming a horse, feeding it a golden apple before saddling up makes it way more likely to accept you. This mechanic actually comes from Greek mythology, specifically the horse Arion. तो अपने को उसको देना ही पड़ेगा, तो फिर वो मतलब उसका चांसेस बढ़ जाता है. Using the replace Tame item होने command, का. you can add a bunch of different items onto ये सब your क्या है? head. However, one Easter egg you might not be aware of is using a lightning rod on your head places it on the side like a snorkel. A nice little feature if you ask me. ओह चलो इसको ट्राई करते हैं ये वाले कमांड को. तो तुम लोग ये कमांड को भी लिख सकते हो स्लैश आइटम रिप्लेस एंटिटी, फिर तुम लोग का नाम सिलेक्ट कर लो आर्मर डॉट हेड विथ, और फिर हम लोग को लाइटनिंग रॉड सिलेक्ट करना है. और जैसे ही हम लोग ने किया हम लोग को एक लाइटनिंग रॉड मिल जाएगा. एक्चुअल में ये काम कर रहा है. तुम लोग ने डाइवर्स को ये पहनते हुए देखा होगा. ये एक्चुअल में सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है. कितना सिंपल फीचर है. और आई थिंक सो तुम लोग ये ग्लास के साथ भी कर सकते हो जितना मैंने ट्राई किया था. और ये देखो तुम लोग लिटरली एस्ट्रोनॉट बन गए. माइनक्राफ्ट में बहुत सारे सीक्रेट और यूनिक कमांड्स है. अगर हम लोग इसमें बोन ट्राई करें, आई थिंक मेरे मुंह के अंदर, यस आई न्यू इट. मेरे को पता नहीं कैसे तो याद था, किसी को मैंने थंबनेल या फिर कुछ देखा होगा, बट वो एक्चुअल में उसने बोन मुंह के अंदर पकड़ लिया है. तुम लोग भी ये कमांड्स ट्राई करो और मेरे को बताओ कैसे लगे कमेंट करके. नेक्स्ट हम लोग स्किप द ट्यूटोरियल की तरफ से देखने वाले. लेट्स गो. As Caesar shows off, if we were to give ourselves the slow Okay. falling potion effect and then use a Riptide Trident, then we'll be able to keep that same speed going right up in a 45-degree angle. Wow. And from there, forget about using rockets for your elytra. We're already well हम into लोग use कर takeoff. सकते हैं ये वाला And as trick. pointed out in this comment, the reason that we use arrows in the first place is that the 11-second duration of the effect makes sure that it's only going to be active on the way up. Because otherwise, we एक just नंबर become है a trick. slow चलो हम लोग falling try through करेंगे the और air ये with our better edition का elytra, trick है. which is a little disappointing when you get that much speed on the way up. Here's how to make your dripstone even deadlier. Use a fishing Okay, rod. Silly मतलब? as that might sound, as the user shows us, it's entirely possible. If you find yourself in a situation like this, place the dripstone underneath the block, and then when you break its support block, you can catch onto the dripstone as an entity with your bobber, and use that to throw towards your enemies. So No while getting the way, spacing literally? might still be pretty Like seriously कैसे? tough to do this, when you pull it off and kill your friend, it really is something special. And this might be the only dripstone kill that's able to top the one that Green got on Double Life. Here's how to moonwalk in अच्छा था, okay. Minecraft. All we need is Moonwalk? an elytra. First off, we're gonna fly down to the ocean, and then Okay. hold up the space bar so that we push ourselves back up to the top of the water. And then from there, we can just start walking backwards. This is a नहीं. fun sight for sure, but remember, नहीं, this will this use is up so some of your trippy, elytra and this is durability. actually a Remember that cool even secret. the best dance moves have their expiration date at some point. Even though you can't see it, I'm wearing a full set of armor right now. Wow. And the way that's possible is that we're able to change our ओ हम लोग एक कमांड से इनविजिबल कर सकते हैं. attributes through this command. So sure enough, we can give ourselves a full suit अच्छा, of हम लोग netherite armor attributes that no देके one's खुद able को to armor see, बना which सकते would be हैं. a fun Good, prank to big pull on brain. your friends during a PvP competition. After all, it looks like you should be easy to kill, but एक्चुअल में क्या ट्रिक है. अगर मैं जावा एडिशन में किसी के साथ पीवीपी कर रहा रहूंगा तो मैं ऑफ कोर्स उसको ट्रोल करूंगा और उस पे वीडियो आएगा पक्का. the truth is not as simple as that. And that isn't even the only attribute that we can change. We can also मतलब? make it so that we attack a lot stronger too, letting us get What? God mode without your friends being No none the way, wiser. seriously? This goat looks like it's in trouble, but don't worry, since the truth क्यों? is that goats are fully capable of doing parkour. And all of a sudden, this दो lava सेकंड. pit मेरे को इतना पता था उन लोग बहुत हाई तक जंप कर सकते थे, बट मेरे को इतना नहीं पता है कि उन लोग ऐसा पार्कोर कर सकते जो हम लोग नहीं कर सकते. एक्चुअल में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यार ये doesn't feel सब. as inhumane.
And the reason for this is because that little bit of hesitation that it does before a jump is actually the goat calculating where it has the best arc to. And you can see all those calculations visualized in this post here. No It's way. pretty cool. Which goes इसको to code show करने that में कितना even time if you're गया the होगा? best at parkour, you'll never be the goat. Never take fall damage again using this one trick. कैसे Since बताओ if you were मेरे to को? fall- You'll notice that if you hit the crouch button right before you hit the ground, then there's a glitch in 1.19.2 that'll negate all fall damage that you would have What? taken. Person I who think इसको discovered patch this, कर दिया you have to be शायद. jumping or falling for more than 35 blocks up in the air to get this to work. Oh. So don't say I didn't warn you if you fall from 34 and take all the damage. Okay. How many iron golems does it take to beat a warden? मेरे को भी Well, if we जानना set है. up our arena like so, we'll be able to find out that even though it's a close battle, the number Okay. is 8 iron golems to defeat one बस warden. 8? So by the end of it, we'll Literally only have बस one 8? iron golem left, so that's a pretty expensive तरी way to पर? get rid of the warden. But if you have the ingots necessary to build up 32 iron blocks मैं worth तो of iron iron blocks लेके golems, जाऊंगा, I of guess course, that's one way definitely. to make your ancient city safer. चलो ये Chests देखते aren't हैं. currently a full block. In the old versions, they sure behave like them. And that'd be Whoa. why we were able to place things like torches, that is rails, cursed. and even ladders on top of our सब कुछ chests. cursed है ये And while सब. I understand why some of this got patched Ladder एक बार को out, ठीक it is है. unfortunate that we can't run our redstone machinery over top of these. That might have made for some cool compact designs. Oh, And wow. while you can pull these off nowadays by using update suppression, इतना ज़्यादा let's be redstone honest, देखता हूँ, मेरा that just दिमाग फट isn't the जाता है. same. Lily pads don't just have to be placed on water sources. They मतलब? also work on waterlogged blocks, meaning that with this setup, we Oh. can place our lily pads Whoa. directly onto our drip leaves, which offer Whoa, I never knew this. चलो टेस्ट करते हैं. तो इसके लिए हम लोग को ड्रिप लीफ चाहिए, as well as हम लोग स्लैब भी ले लेते हैं. एंड द मेन थिंग, लिली पैड. अपने को पता है अपन पानी में प्लेस कर सकते हैं कि हम लोग वाटर लॉक कौन से भी ब्लॉक में प्लेस कर सकते हैं. लेट्स सी दिस एक्चुअली वर्क्स. तुम लोगों को नहीं पता लिली पैड एक्चुअली हम लोग किधर भी प्लेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर अबव वाटर. चलो इसको ड्रिप लीफ के साथ ट्राई करते हैं. इट एक्चुअली वर्क्स. सच्ची में. 2 सेकंड, अगर मैं स्टेयर्स के साथ करूँ तो चलो ट्राई करते हैं. वाटर लॉक नहीं है. It actually works. It literally works. कैसे? क्यों? Don't ask me, but yeah, it works. Let's go. चलो हम लोग अपना फाइनल सीक्रेट देखते हैं. We've also बेटर seen our बहुत fair ज्यादा share of स्ट्रांग है glitches and एक्चुअल में. bugs to break the unbreakable. And while that's true, this might be both the Okay. strangest and the simplest method in my book. ये See, मुझे in याद है. Bedrock Edition, ये if मुझे you lay a literally याद cauldron है. underneath a piece of ये एक्चुअल में पुराने एक अपडेट में आया था और उसको इंस्टेंटली फिक्स कर दिया था. तो हम लोग ज्यादा लोगों को टेस्ट करने मिला नहीं, बट मैंने एक्चुअल में किया है टेस्ट और उस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था. इसमें तुम लोग कोल्ड्रन प्लेस करते हो और फिर उसके बाद तुम लोग पाउडर Bedrock स्नो प्लेस or करते हो और फिर उसके बाद एक और बार पाउडर स्नो प्लेस करते हो तो ऊपर वाला ब्लॉक डिलीट हो जाता है. ये देखो वो बताएगा अभी. block for that matter, and then fill it in twice with powdered snow ये देखो, buckets. The I told result you. is a powdered snow block वापस in एक और बार place of place that करेंगे bedrock. and then ऊपर का And break. what's even better is that we can reuse that same snow for doing it all over again. वापस, These literally definitely वापस serve कर their सकते हैं हम लोग. purpose. But while they're good for guiding mobs, they aren't as much for decoration. Though Okay, a ये bucket is क्या all है? we need to flip that switch. See, if you were to place मतलब? an axolotl next to a fence post, tie the two together with a lead, and then pick up the axolotl again in the water bucket, the lead will still be knotted to the pole, which Oh. is bizarre, but it'll let us get that extra detail from Minecraft building. And if you ask 2 सेकंड, ये हम लोग के पास एक बिल्ड हैक है. चलो इसको टेस्ट करते हैं. आई डोंट थिंक ये सिर्फ एक्सोलॉटल के साथ होता है, तो हम लोग शीप के साथ भी ट्राई करेंगे. फिर तुम लोग बोलोगे शीप को बकेट में कैसे डालेगा. आई थिंक आई हैव टू स्लॉटर हिम. और ये हम लोग क्यों करने वाले जिन लोग पूछ रहे हैं, इट इज जस्ट अ बिल्ड हैक. ओके, नथिंग पर्सनल. शीप के साथ अपने. चलो इसको पिना दिया. बाय बाय. चल मैं ये काम कर रहा है तो तुम लोग अपने फेंसेस को थोड़ा डेप्थ देने के लिए कर सकते हो. प्लीज रुक जा. एंड आई एंड दिस एक्चुअली वर्क्स. 2 सेकंड, मेरे पास समझो मैंने 2 स्ट्रिंग यूज कर लिया और स्ट्रिंग मेरे पास ड्रॉप भी हुआ. कैन आई टेक दिस? ओ मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो ले सकता हूं. व्हाट? दिस इज इलीगल. ओ हट गया. व्हाट इज दिस? ओके, मुझे नहीं पता क्या था वो, बट क्या तुम लोग को ये सब माइनक्राफ्ट सीक्रेट्स पता था? कमेंट करके बताओ. अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना. चैनल पे नए हो तो जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो. एंड विद दैट सेड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. चलो बाय बाय.